Welcome back to our chapter on force and momentum. We have started with these few examples. We are going to learn about these four different types of examples. So till now we have completed our concept based on the Newton's laws. So this that we have covered it with this example. Then this is also the example which has been covered in the Newton laws, and this is also the example which has been covered in the Newton law. So this was the Newton first law, this was the Newton's second law, and this was the Newton's third law. So what about this? So today we are going to cover this example, what this example says. For that we'll just have a recap what we have done in our last class. So we have started with the applications of Newton's laws. So in the first application we have started with projectile motion. So how the object travels a path along this way. So we have derived an expression. We have proved that the dr by dt is equals to gt plus v naught, and then we have derived this expression, so which is similar to our kinematical expression, that is v plus u plus at. Again this is also a similar kinematical equation that is s is equals to ut plus half at. Then we have the another application of Newton's law, that is a friction. So in that we have proved that the F1, if F1 is equals to minus F1 dash, F2 is equals to minus F2 dash. So we can say that F2 is equals to F. Then the diagram shows that the normal is normal and mg both are anti-parallel to each other. The normal is in the upward direction and mg is in the downward direction, and F2 and F1 anti-parallel, so those are also in opposite direction. Then we have the for the coefficient of static friction, that is F is equals to mu s into n. Then we are going to start a new topic, that is a third application of Newton's law, so which was a motion against resistive force. So we have got an expression F naught is equals to RV is equals to m dv by. Then we have define what is meant by equilibrium of forces. So here in this part, so this is an example of for the equilibrium of forces, but here in this case the total sum of all the forces is equals to 0. So if the summation of f of x is there, that is also equals to 0, then summation of f of y is also equals to 0. So the summation values is equals to 0. Okay, start our first topic which we have to cover it for today. So we have to start with a solved example. We have one solved example, so that we have to solve. So in these examples you will see that we are having a point A and B. So these are the points, these are actually a string. On this string we are having a mass m. Okay, so here it is directly downwards, so it is weight is equals to mg. Okay, now this is the x-axis and this one is the y-axis. In simple words, if I'll say दो पॉइंट्स है A और B जहाँ पे एक धागा पकड़ के रखा हुआ है, और उस धागे के बीच में यहाँ पे मतलब O के यहाँ पे कुछ वेट लगाया हुआ है. तो इस केस में हमें ये जो टेंशन है वो टेंशन कैलकुलेट करना है. ये जो टेंशन है अपवर्ड, यहाँ पे A के पास जो है वो T है और B के यहाँ पे T डैश है. Now here it makes an angle theta, and here with the x-axis it is making an angle 90 minus theta, and here also the same way.
So these, they are mutually perpendicular to each other. Fine. So here in this part, from the previous expression, that is equilibrium of forces, from that expression we can prove that minus t cos 90 minus theta, t cos 90 minus theta plus again t dash cos 90 minus theta. So this is t dash cos 90 minus theta. So here in this case, and that is equals to 0, and we are having one more thing, that is t cos theta plus t1 cos theta minus mg is equals to 0. So this is one more expression we are getting it here. Now here from this expression, that is 2.17, the value of t dash is not equals to, is equal to t, but the theta cannot be equals to 0, because ये एक एंगल बना रहा है, ये दो जगह से इसे पकड़ा गया हुआ है धागा. So in this case the theta, this theta cannot be 0, मतलब एक ही थ्रेड से ये अटैच नहीं है. ठीक है. तो यहाँ पे मैंने अभी क्या बताया हुआ है, t dash is equals to t1 t. So I'll substitute this in this expression. Oh sorry, in the below expression, that is 2.18. So if I'll substitute this t in this expression, so what I'll get, t cos theta plus t dash will become t cos theta minus mg. So this minus mg, I'll bringing it to the RHS side. So I'm getting 2 t cos theta is equals to mg. So as a result, t is equals to t dash mg cos theta. So I have got an expression for the tension, so which I have to prove, that t and t dash in terms of m and theta. Getting it? So hence proved, we have solved this problem. If we will see here in this case, the value of theta is increased. If we increase the theta, the cos theta will decrease. So it will increase the tension. टेंशन का जो वैल्यू होगा वो इंक्रीज होगा, टी का वैल्यू इंक्रीज होगा. सो दिस मे लीड टू ब्रेकिंग ऑफ द स्ट्रिंग. टेंशन ज्यादा होगा तो क्या होगा, स्ट्रिंग जो होगा, स्ट्रिंग मतलब जो धागा होगा वो टूट जाएगा. सो it is for this reason that the main cable supporting the suspension of a bridge must be hanged with a substantial curvature. एक पर्टिकुलर एंगल से उसे पकड़ के रखना चाहिए. ठीक है. इफ द केबल वेर स्ट्रेच्ड straight across the tension would be so large that it will break. Now here this is in just you have to do it as a homework. A connection used for joining different pairs. This is a machine pairs in equilibrium. Applying forces, applying two forces, P and Q. This is P and this is Q. Of magnitude P is equals to 3000 Newton and Q is equals to 4000 Newton. So here we have to determine the tension in rods, this one and this one. So will we able to solve this? Refer the previous problem, we'll be able to do. Now till now we have completed our Newton laws of motions, then we have completed the applications of Newton laws, and we have completed the topic with some examples, and the last and not the least, the equilibrium of forces we have done. So let's start with our momentum. As in the previous topics, that in Newton's second law we have learned momentum is the product of mass into velocity. So now here in this case, if we are having two particles, one is here, this is 1, here this is 2. They are having the mass, this is having a mass m1, this particle is having mass m2. Now the momentum for this particle I will denote it as p1. Momentum for this particle I will denote it as p2. Now we are going to start a topic called as total linear momentum. तो total momentum क्या होता है?
दो पार्टिकल्स होते हैं, सो वी आर हैविंग टू पार्टिकल्स. फॉर दीज टू पार्टिकल्स what is total momentum? So the total momentum of a body is what? So that we are going to learn here. Now, so the total momentum of this system, this is an example of a system. Of this system is just addition of both the momentums. Take the momentum of particle A, take the momentum of particle B. So when I'll add both the momentum, you will get the total momentum of the whole system. Now, so what does this momentum exactly hold? What does this momentum have? As we know by Newton's second law, the rate of change of momentum is what? Rate of change of momentum is the vector sum of all forces acting on one. ठीक है. सो न्यूटन सेकेंड लॉ के बेसिस पे अगर हम लोग देखते हैं तो मोमेंटम जो है, मोमेंटम मतलब क्या है? दी सारे के सारे फोर्स का एडिशन. अभी वन पार्टिकल के लिए कौन कौन से फोर्सेस है? एक है Fe1. ये कौन सा फोर्स है? Fe1 मतलब एक्सटर्नल फोर्स. और टू पार्टिकल के लिए एक्सटर्नल फोर्स कौन सा है? Fe2. अब ये F21 और F12 क्या है? नाउ F12 मतलब टू पार्टिकल पे वन से कौन सा फोर्स एक्ट होता है? ये इंटरनल फोर्स होता है एक्चुअली. एंड वन पार्टिकल पे जो फोर्स एक्ट होता है वो है F21. मतलब ये वाला F21 मतलब सेकेंड पार्टिकल पे एक्ट हो रहा है, सेकेंड पार्टिकल पे एक्ट हो रहा है वन से, और ये है फर्स्ट पार्टिकल पे एक्ट हो रहा है टू से. ठीक है. सो नाउ हियर यू विल सी द टोटल एक्सटर्नल फोर्स ऑन इट एंड द इंटरनल फोर्स ड्यू टू टू. ठीक है. टू की वजह से इस पे कौन सा इंटरनल फोर्स एक्ट हो रहा है? F21. सो हियर इन दिस केस यू विल सी Fe1 एक्सटर्नल फोर्स प्लस इंटरनल फोर्स प्लस द मोमेंटम. किसके लिए? पार्टिकल 1 के लिए. सिमिलरली पार्टिकल 2 का क्या होगा एक्सप्रेशन? Fe2 प्लस F12 प्लस dP2 बाई dt. ठीक है. तो मैंने मोमेंटम निकाला फर्स्ट पार्टिकल का, मैंने मोमेंटम निकाला सेकेंड पार्टिकल का. ठीक है. अभी न्यूटन का सेकेंड लॉ अप्लाई किया है, तब मैंने ये दो पार्टिकल्स का मोमेंटम निकाला. सिर्फ अभी देखो हमें क्या निकालना है लास्ट में, हमें सिर्फ दी कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का कॉन्सेप्ट लाना है इसमें. वो देखो कैसे आता है. सी, सो नाउ वी हैव डिटरमाइन दी formulas for the momentum P1 and for the momentum P2. As we know the Newton's third law, the F12 is equals to minus F12. Both are equal and opposite. Okay, so we can apply this thing here. So if we'll apply these things here, so these two terms will get cancelled out. So as a result we will get Fe1 plus Fe2 is equals to dP1 upon dt plus dP2 upon dt. Okay, so these two are nothing but the net external force on the system, the external force acting on the system. So we can write this together as Fe, and this is d by dt P1 plus P2. So instead of writing P1 plus P2, I can write it as simply P. So Fe is equals to dP by dt. So what I want to say here in this case, thus in a system of interacting particle, it is the external force which produces acceleration, not the internal force. मतलब इसमें जो changes जो आ रहा है वो कौन करता है? एक्सटर्नल फोर्स. इंटरनल फोर्सेस कुछ नहीं करता. तो ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला किस कॉन्सेप्ट की ओर लेके जा रहा है? इट इज लीडिंग यू टू द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक, उस टॉपिक का नाम क्या है? दैट इज कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. सो व्हाट इज मीन बाय conservation of linear momentum? If the net external force acting on the system is 0, then its linear momentum is conserved. मतलब एक सिस्टम है
और उस सिस्टम पे बाहर से कोई फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है, तो उस सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, दी टोटल लीनियर मोमेंटम. So that is a conservation of linear momentum. So conservation of linear momentum says that the net external force acting on a system is 0. That's it. So as a result, what we are getting it here, now if the Fe is equals to 0, so my dP by dt is also equals to 0. So as a result, my P is equals to P1 plus P2. So it will give me some constant vector. Fine. So this is also an examples of conservation of momentum. Here in this case, if this ball is here and if I throw this ball here, so what will happen? This ball, one ball will come out and it will have some peak and it will come back to its rest. Again, that one ball, these three balls remain here only and the one ball will come out. So this is also an examples of conservation of linear momentum. So there is no external force acting on. Let's begin with some solve problem again. So here in this case we are having a particle. I didn't got exact drawing for the particular example what I am going to explain, but here in this case what has happened, there is a vessel which has exploded and we are having only 3 parts. So I didn't got a vessel with only 3 parts, 3 pieces. So I have just taken a wood and that has exploded. So the explosion of wood, but here the number of pieces are comparatively more. बट इन आवर एग्जाम्पल, हमारे जो एग्जाम्पल है उसमें हमें सिर्फ तीन ही पार्टिकल्स बताने हैं. तो देखो, अ वेसल एट रेस्ट एक्सप्लोड्स ब्रेकिंग इनटू 3 pieces having equal mass fly off perpendicular to one another with the same speed of 13 meter per second. Now show that immediately after explosion the 3 piece moves in the plane of the other piece. If the third piece has 3 times the mass of either of the piece, what is the magnitude of its velocity immediately after the explosion? So हमें उसका velocity निकालना है explosion के बाद का उस पार्टिकल का. तो अभी यहाँ पे देखो, ये एक डायग्राम दिया हुआ है explosion के बाद में, ये जो 1, 2 और 3, तो एक पार्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन, मतलब समझो एक y एक्सिस में गया, दूसरा गया है x एक्सिस में और तीसरा गया है z एक्सिस में. तो इस तरह से ये एक्सप्रेशन का डायग्राम दिया हुआ है. तो 3 पार्टिकल्स है तो ऑब्वियसली उनके जो मोमेंटम होंगे वो भी अलग होंगे. तो मोमेंटम विल बी P1 P2 P3, इस तरह से उसके मोमेंटम होंगे. सो लेट्स सी व्हाट इज बीइंग रिटन हियर. सो इसके बाद में दी vessel was at rest prior to the explanation, so its linear momentum was 0. So as a result, और एक बात है कि इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है, तो हमारा एक्सटर्नल फोर्स का जो वैल्यू होगा वो वाला 0 होगा. सो नेट फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है, तो सो इट्स टोटल लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड. बाहर से कोई फोर्स एक्ट हो रहा है क्या उन्हें तोड़ने के लिए? नहीं. तो एज अ रिजल्ट इसका जो मोमेंटम होगा वो होगा, क्या होगा, द टोटल लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड. तो अभी इसका जो फाइनल मोमेंटम का एक्सप्रेशन क्या होगा, P1 प्लस P2 प्लस P3 इज इक्वल्स टू 0. ठीक है. तो इसमें हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं P1 P2 इज इक्वल्स टू माइनस P3, मतलब P1 और P2 को दोनों का ऐड कर लो तो उसके बाद में हमें मिलता है माइनस P3. ठीक है. तो ये वाला एक्सप्रेशन याद रखना है, ये वाला एक्सप्रेशन याद रखना है. हमें ये प्रूव कर रहे हैं आगे, बिकॉज हमें वेलोसिटी निकाला है आफ्टर एक्सप्रेशन के बाद का. ठीक है. नेक्स्ट है, ये देखो यहाँ पे हम लोगों ने क्या दिया, P1 प्लस P2 दोनों के दोनों एक ही प्लेन में है. ठीक है. सो इन अकॉर्डेंस विद दिस इक्वेशन, minus P1 plus P2 they are in same plane and minus P3 is there, so minus P3 must also lie in that plane. So P3 lies in the same plane as P1 and P2. So what we are getting it here is, what we are doing, P1 plus P2 into multiplying P1 plus P2 into P1 plus P2 is equals to minus P3 dot minus P3. So here in this case, after opening the bracket, P1 gets multiplied with this, so it becomes P1 square. P2 gets multiplied with P2, so it will become P2 square plus
this P1 multiplied with P1 and this P2 multiplied with this P1. So we are getting 2P1 dot P2 which is equals to, ये माइनस माइनस का मिला के प्लस हो जाता है तो हमें ये टोटल क्या मिलेगा P3 स्क्वायर. सो एज अ रिजल्ट, और एक बात, ये P1 एंड P2 दोनों परपेंडिकुलर है. सो P1 इज परपेंडिकुलर टू P2. परपेंडिकुलर होने की वजह से दे कम्स आउट टू बी 0. ठीक है, अप टिल हियर इट इज क्लियर. ये डायग्राम क्लियर है एक्सप्लोजन का. और ये वाला डायग्राम सो P3 स्क्वायर इज इक्वल्स टू P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर, है ना. पहले हम लोगों ने P1 डॉट P2 इक्वल्स टू 0 क्यों? बिकॉज P1 इज परपेंडिकुलर टू P2. ठीक है, तो अभी हम लोग इसमें क्या सब्सटीट्यूट कर रहे हैं? सो वी आर सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ P3. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P3? 3m v. This is v is the final velocity, m is the mass, and here in this case the mass of P1. So this is m, velocity u, again here mass and its velocity, so m u the whole square. So what we are getting here is 3 square, so it is 9 m square into v square, which is equals to, these are 2, so this becomes 2 m square into u square. So इस केस में हमें v क्या मिलता है? mm कैंसल्स होता है, तो v is equals to square root of 2/3 into u टर्म. तो अगर इस प्रॉब्लम के बेसिस पे अगर हमें इनिशियल मोमेंटम 300 मीटर पर सेकेंड सब्सटीट्यूट करते हैं तो हमें वेलोसिटी क्या मिलता है? 10 स्क्वायर रूट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड. इसे पर बोलते हैं, मीटर पर सेकेंड. हमें अलग मेथड से ये अगर फाइंड आउट करना हो तो वो वेक्टर फॉर्म में हमें चाहिए तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं. सो एज वी नो P1, P2, P3 in two mutually perpendicular direction of x and y axis. These are the components along these things. So P1 is along x axis, P2 is along the y axis. ये तो देखा ही है. और P3 जो है वो एंगल बनाता है, it makes an angle theta with x axis. ठीक है, so what we can write it as P1 I crown, P2 J crown is equals to minus P3 cos theta I crown plus P3 sin theta J crown. ठीक है ना. अभी हमें क्या करना है? हम लोग I crown टर्म साथ में लेंगे, J crown टर्म साथ में लेंगे. सो P3 cos theta is equals to, ये माइनस है ना, is equals to P1 and minus P3 sin theta is equals to P2. ये माइनस साइन जो होगा दोनों टर्म को मल्टीप्लाइड होगा. सो एज अ रिजल्ट what we are getting, what we have, that is P3 square is equals to P1 square plus P2 square. ये दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाइड करो एंड देन ऐड करो, सॉरी. सो दिस विल बी P3 and square and add P1 square plus P2 square, and this will be P3 square and this cos square plus P3 square sin square. तो sin square थीटा plus cos square थीटा का वैल्यू क्या है? 1. तो हमें सिर्फ P3 स्क्वायर मिलता है. तो P3 स्क्वायर इज इक्वल्स टू P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर. So as the one which we have proved it. So now we are going to start with a new topic called as impulse. So in a previous steps we have given an explanation for the law of linear momentum. So now let's start with impulse. Impulse, oh, अभी ये example आ गया. क्या है ये? What is this? A hammer is being hit on a nail and the nail goes inside the block. So this example is actually the impulse. So impulse का मतलब क्या होता है? Large amount of force is being acting on an object for a short duration of time. मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट पे हम लोग बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई करते हैं थोड़े से टाइम के लिए हम लोग बहुत ज़्यादा जो फोर्स अप्लाई करते हैं उस तरह के फोर्सेस को हम लोग क्या बोलते हैं? इम्पल्स. सो हमारे
इस बुक में क्या एग्जांपल दिया हुआ है कि एक क्रिकेट बैट्समैन है, जब वो बॉल को हिट करता है तो बॉल को जो हिट करता है वो टाइम बहुत कम होता है, ठीक है। द टाइम अप्लाइड on the force, the velocity applied on the ball and the time for which it hits the bat, that is, it's very small compared to the change in velocity as it has experienced, ठीक है। So what we want to explain you that impulse means what, impulse का मतलब क्या होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे हम लोग थोड़ा सा फोर्स भी लगाते हैं तो उसमें जो चेंजेस होते हैं उसके वेलोसिटी में, उसमें कभी कभी क्या होता है कि उसका शेप भी चेंज होता है, तो इस तरह की केसेस को हम लोग इम्पल्स बोलते हैं। सो व्हेन अ लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स इज बीइंग अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, वी कॉल दैट टाइप ऑफ फोर्स एज इम्पल्स। द सिंबल फॉर इम्पल्स इज जे, ठीक है। सो जे अगर इम्पल्स को डिनोट करना है तो इट इज रिटन एज जे एंड द फॉर्मूला इज एफ इंटू टी, ठीक है। सो ये है हमारा T1 और T2 दो टाइम दिया हुआ है, तो इस टाइम के बीच में हम लोगों ने बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई किया उस ऑब्जेक्ट पे, ठीक है। तो दिस इज एक्चुअली द डायग्राम फॉर द इम्पल्स, ठीक है। तो अभी मैंने एक एग्जांपल दिया है हिटिंग ऑफ नेल विद द हैमर, सेकेंड एग्जांपल इज हिटिंग ऑफ बॉल विद अ बैट, दैट इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ इम्पल्स, ठीक है। तो इस केस में दो इंटरवल्स आते हैं, एक है T2 टू T1। सो हमारे पास में so we are having force f of t dt, and that is an integral by Newton's second law, t1 by t2. So t1 by t2 integral t1 by t2 dp by dt into dt, so which will give me p t2 minus p t1, which is equivalent to delta p. So the integral of force over time is called the impulse of the force, and it is also given as this whole thing, I can given it as j. So j is equals to integral t to t1 ft into dt. तो इस केस में अगर हम लोग देखेंगे कि इम्पल्स का मतलब क्या होता है, डेफिनेशन तो मैंने सबसे पहले दे दिया। इम्पल्स का फॉर्मूला क्या है, j इज इक्वल्स टू एफ इंटू टी, बट हम लोग इसमें इंटर टाइम के बेसिस पे टाइम का इंटीग्रल लिया हुआ है, सो इट इज इंटीग्रल t1 टू t2 इंटू एफ टी इंटू डी टी, ठीक है। तो अभी हम लोग एवरेज फोर्स निकाल, सो एवरेज फोर्स अगर निकालने को जाए तो व्हाट वी विल बी गेटिंग, इम्पल्स का इट विल बी 1 by dt इंटीग्रल t1 t2 by एफ टी इंटू डी टी। सो डेल्टा टी क्या है, t2 माइनस t1। सो एज अ रिजल्ट हमारा जो एक्सप्रेशन, जो फॉर्मूला हमें चाहिए था इम्पल्स का, तो इम्पल्स का फॉर्मूला क्या मिलता है, impulse is equals to f into dt, so which is nothing but the change in momentum, okay. So we have derived an expression for the impulse, we have given a definition for the impulse, we have given the examples of impulse and the general notation for impulse. The impulse is being denoted by j. So what could be the SI unit for this, f means Newton and this is time is second, so the SI unit for the impulse is Newton second, fine. So till now we have covered it, the two problems, we have covered it the concepts of linear momentum and we have covered it the concepts of impulse for our today's class, and in this class we have learned with some examples also, then we have revised what we have did it in our last class, the applications of Newton's law and the equilibrium of forces, okay. So that's it for today, thanks for watching.